Hello, hi. Hi. So I was just introducing you to our viewers. So let me first finish that introduction. Okay, thank you so much. Myself, dietitian Harita Adhvaryu. I am from Ahmedabad. I am a clinical nutrition and I am a certified diabetes educator. And I am doing my practice as a dietitian since last 6 years. Great. So here is your audience. Here is your introduction of the dietitian. We are very happy to welcome you for this live session, Harita. Thank you so much. It's my pleasure actually. Great. So shall we begin? Okay, definitely. So I'll get straight to the most important part of this whole discussion. What are some home remedies for constipation? Does drinking Eno work in such cases? Okay, your question is very good, but let me start with the main question that what is actually constipation, right? First, we need to understand what is constipation. Right. Right, so it depends person to person. If a person has a habit of going for bowel movement 3 times in a day or 3 times in a week, it's quite okay. If a person not feeling very bloating or he is satisfied with his bowel movement, then he is not constipated, right? But if a person is going for his bowel movement 3 times in a week, still he is not feeling satisfied with his excretion, that it means that he is constipated, right? So it's very necessary to understand the basic definition of constipation, that differentiate between your feelings, that are you constipated or not, right? And having and all such this kind of things like artificial laxative, I think it is not so much advisable. If you want to eliminate your this problem of constipation, you have to work on your food habits, on your daily physical activity, and on your mental health. Having can help you for 1 or 2 times, but every time it is not advisable for you, as you are not treating your problem from the root cause, and you are not treating your problem with the proper lifestyle modification. So you talked about food habits. तो Right. ऐसे कौन से फूड्स हैं, खाना है, ऐसा कौन सा खाना है जो लोगों को कॉन्स्टिपेशन, स्पेशली जो लोग हु आर स्ट्रगलिंग विद कॉन्स्टिपेशन शुड ईट? ओके, कॉन्स्टिपेशन के लिए देखने जाओ तो पर्टिकुलर में आपको ये खाओ तो कॉन्स्टिपेशन चलाएगा, या ऐसे बहुत सारे फूड्स है जो आपको हेल्प करते हैं, बट ऑल यू हैव टू वर्क ऑन योर बैलेंस फूड, कि आपका जो मील होना चाहिए वो बैलेंस होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका फाइबर कंटेंट बहुत ही अच्छा होना चाहिए, स्पेशली इनसोल्यूबल फाइबर जो है वो आपके डाइट में अच्छा खासा होना चाहिए। इनसोल्यूबल जैसे कि आपको जो भी लेग्यूम्स में मिलता है, जो भी नट्स एंड सीड्स में मिलता है, दैट इज इनसोल्यूबल फाइबर, जो आपके जो भी गट बैक्टीरिया उसको हेल्प करेंगे, आपकी बाउल मूवमेंट को इंक्रीज करेंगे, और आपको एक अच्छा सा एक्सक्रीशन प्रोवाइड करेंगे। सो आप जो भी आप कार्ब्स ले रहे हो, जैसे कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताती हूँ, कि अगर आप सब्जी रोटी खा रहे हो तो उसके साथ अगर आप 1 बाउल ऑफ दाल ले रहे हो और 1 बाउल ऑफ यानी कि 100 ग्राम्स आप मिनिमम ग्रीन सैलेड्स ले रहे हो, और आपके आफ्टर लंच इफ यू आर टेकिंग 1 ग्लास ऑफ बटर मिल्क, सो एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जो भी आप खाना खा रहे हो वो बाइट बाइट करके धीरे धीरे च्यू कर रहे हो। 1 बाइट को अगर आप 20 to 25 टाइम च्यू करते हो तो डेफिनेटली आपका हाफ ऑफ द डाइजेशन जो है वो आपके माउथ में ही हो गया, बिकॉज योर डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम योर माउथ। सो बहुत ही लोग खाना बहुत सही खाते हैं लेकिन बहुत गलत तरीके से खाते हैं, जैसे कि 10 मिनट में डिनर या लंच फिनिश हो जाता है, आइदर दे आर हैविंग एनी काइंड ऑफ स्क्रीन एक्सपोजर, लाइक टीवी के सामने या मोबाइल के सामने खाना खाते हैं। सो यू आर नॉट गिविंग प्रॉपर टाइमिंग टू योर च्यूइंग प्रोसेस, आप अपने खाने को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, और इसी की वजह से
आप जो भी खाना खा रहे हो वो पार्टिकल्स में अंदर जा रहा है, वो प्रॉपर च्यू होके नहीं जा रहा। और ये जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स है यही आगे जाके आइदर दे आर कन्वर्टेड टू एनी काइंड ऑफ कॉन्स्टिपेशन इश्यू, आइदर दे कन्वर्टेड टू IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, या फिर ये आगे जाके यही पार्टिकल्स आपके बॉडी में ट्यूमर पैदा करते हैं। Okay. So what happens when when they are struggling with constipation? उस टाइम पे अगर कोई ये डिसीजन ले ले कि हमें खाना ही नहीं खाना है, तब क्या होता है? ये ऐसी बात है कि मेरा मान लो कि मेरा मशीन बिगड़ गया है, तो मैं ऐसा करूंगी कि ना ही मशीन को रिपेयर करवाऊंगी, ना ही मशीन को चालू करूंगी, राइट? सो इट इज नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप बैलेंस मील ले, और सबसे इम्पोर्टेंट आप जो भी खाना खा रहे हो उसके साथ में आपका वाटर इनटेक कितना है, राइट? क्योंकि हमारे बॉडी का 60 to 70% जो है वो वाटर है। आपका ब्रेन ले लो, हार्ट ले लो, लंग्स ले लो, सारे बॉडी पार्ट 70% इज वाटर। तो आप जो भी खाना खा रहे हो साथ में अगर आप हाइड्रेटेड रहते हो, पानी सिप सिप करके बैठ के पीते हो, और जो भी आपका नेचुरल जो भी फूड है जैसे कि चिप्स हो गया या फिर जंक हो गया, इसको आप मिनिमम टू मिनिमम ले रहे हो। अगर बहुत कुछ नेसेसिटी नहीं है तो आप इसको अवॉइड कर रहे हो। और नेचुरल जो भी फूड है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि जिसमें खुद में जान है ऐसा ही फूड हमको खाना है। जैसे कि मैंने जमीन के नीचे अगर मूंग को डाला तो मूंग निकलेगा, पर मैं चिप्स को डालूंगी तो कुछ नहीं निकलेगा। तो जो भी खाना जो है आप ले रहे हो उसमें खुद में जान होनी चाहिए, और आप ऐसा ही नेचुरल फूड लेते हो, साथ में आपका वाटर इनटेक अच्छा है, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा लेते हो, देन इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू ट्रीट योर कॉन्स्टिपेशन। So is it a myth or truth that eating dry fruits can cause constipation? या इसमें मैं ये आपको ये बताना चाहूंगी कि ड्राई फ्रूट्स ये डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट ड्राई फ्रूट्स एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है सही से? यस, हाँ। सो अगर आप ड्राई फ्रूट ले रहे हो पर उसको अगर आप सोक करके नहीं ले रहे हो, रात के टाइम पे ले रहे हो, खाना खाने के तुरंत बाद आप 1 fist ड्राई फ्रूट ले रहे हो। Sorry for the interruption. One of our viewers is actually from Kerala, so it would be great if we could switch to English. Maybe. Okay, no problem. So having dry fruit is not a problem at all, but if you are taking your dry fruit right after your meal, if you are not soaking in water and you are having at night without soaking, and if you are taking too much of dry fruit, then it will definitely increase your constipation, as its name suggested, it is a dry fruit. Right? So it's very necessary to soak your dry fruit at least for 3 or 4 or 5 hours and peel out its skin, because its skin having phytates. So it's very important to remove the skin and then consume your dry fruit like almonds, cashew, and your walnuts, all such things, your fig, all such things you have to soak at night, and then in morning you can have such kind of dry fruit. But it's not advisable to consume at night after having any heavy meal, or dry fruit is really very heavy things to digest. So it is always advised to have in during sun time, during daytime, not at the after your supper, after your dinner. Okay, so before we continue further, first of all, एक चीज है, मेरे अराउंड थोड़ा सा शोर है, तो अगर वो पीछे से आ रहा होगा तो आई एम रियली सॉरी फॉर द व्यूअर्स एंड टू यू हरिता. Also, before we continue further, I would like to tell our audience about our communities of diet, diabetes, oral health, pregnancy, and women's health on WhatsApp. Please join these supportive communities of individuals like you and improve your health journey. Find the links to these communities in our bio. See you all there. So, moving on. One of the members of our, the community that I just spoke about, one of the members of that community had an episode where they threw up every time they had food, and it went on for a week. Was this because of constipation?
Can you please repeat your question? I couldn't hear you properly. Okay, sorry. One of the members of our WhatsApp community had an episode where they would vomit up every time they had food, and it went Okay. on for a week. So they are asking that whether it happened because of constipation. Yeah, it may not be because of the only constipation. Maybe that person may have some food reaction. He may have any undigested food in his stomach. So there may be possibilities of irritable bowel syndrome also. It can be a start of irritable bowel syndrome. So better to diagnose, better to take a report and ask your doctor, because if you are doing vomiting for at least 1 week, it's not a quite easy thing and it's not a normal thing, right? So it may not be just because of the constipation, but there are multiple reasons behind it. So you have to go through your what you are having in last your 1 week, last your 10 days, what types of drinks you have taken, what types of food you have taken. You have to notice all such things. Okay. So another member, due to PCOS, they had started a low calorie diet. Since then, they have been struggling with constipation during their period specifically. So how can they fix that? Okay, so actually, if a girl is not having PCOS, then it's sometimes it's very normal that during your periods time you may suffer diarrhea or constipation. It's a natural thing. Sometimes you feel diarrhea or sometimes you may feel constipation. So the basic thing is during that period you have to take too much of your you have to increase your fluid, right? आपको आपका पानी का intake बढ़ाना है. आपको natural juices like green juices, like red juices, like you have to take tomato soups, like cucumber and spinach and carrot, all such things. So if you are increasing all such kind of thing, there can be possibilities that you may not suffer any kind of constipation or any other problem. बिकॉज पीरियड्स के दरमियान ये इश्यू मुझे भी अपने पीरियड्स के दौरान ये इश्यू था कि मुझे उस टाइम डायरिया हो जाता था, राइट? सो ये बहुत नेचुरल चीज है, पर आपको ये बार बार हो रहा है, देन यू हैव टू इंक्रीज योर फूड एंड यू हैव टू चेंज योर फूड पैटर्न ड्यूरिंग पर्टिकुलर ड्यूरिंग दैट 8 to 10 days. इसके बीच में ना आपकी आवाज में थोड़ा सा वो हो रहा है, आपके एंड से इको आ रहा है. हाँ, तो हाँ. So anyways, moving further, does drinking cold water cause constipation? Yeah, definitely. I would like to explain this. If we are having cold water, हमारा जो stomach होता है उसमें जो हमारा digestive juices होते हैं, they are acidic in nature, right? So कुछ भी हम खाना खाते हैं, मान लो कि if I'm used to take my lunch at 1:30 daily, so my all juices will sit at that time and they will wait for food. अभी इको आ रहा? हाँ, अभी भी थोड़ा सा इको आ रहा था, इसलिए. ओके ओके, मे बी ये शायद रूम बंद है इसलिए हो रहा है. जस्ट अ सेकंड. Okay. So now is it fine? I think so. Let's see. Okay. So whenever we are drinking such cold water, जो भी हमारा juices secrete हुआ है, acidic juices secrete हुआ है, उसपे ये पानी डालने का काम करे, उसको ये पूरा ठंडा कर देता है, right? So cold water will decrease your appetite, will decrease your digestive power, your digestive juices,
सो इसकी वजह से आप कॉन्स्टिपेटेड फील करोगे और डेफिनेटली कोल्ड वाटर से आपको पेट भरा भरा फील होता है, तो डेफिनेटली ये आपके जो सारे आपकी जो नेचुरल एपिटाइट है इसको ये बिल्कुल डिक्रीज कर देता है। आपके जो भी जूसेस सीक्रेट होते हैं उसको ये पूरा कूल कर देता है। सो इसकी वजह से आपका पूरा मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। डेफिनेटली कोल्ड वाटर डिक्रीज योर मेटाबॉलिज्म, राइट। सो इसकी वजह से यू फील कॉन्स्टिपेटेड और आपका अच्छी तरीके से डाइजेशन नहीं हो पाता। ओके, सो कोल्ड वाटर एज इन एकदम ठंडा पानी या नॉर्मल पानी और गर्म पानी पी सकते हैं? नहीं, एकदम ठंडा जो चिल्ड कोल्ड वाटर है दैट इज नॉट एडवाइजेबल, बट डेफिनेटली यू हैव टू चूज योर मटका वाटर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर, नॉट टू मच कोल्ड वाटर। Okay. But it should not come from any plastic container. It should not come from fridge. It should be with a steel container or with mitti container. Okay. That's a very good suggestion, actually. So another one of our members have posted this question. They're asking, my father-in-law has had acute constipation for the past 5 to 6 years, and due to work, he has a very bad routine. Being in a construction line, his eating habits are not very good due to work pressure. Can you please suggest a diet to help him with his constipation? And foods that he should consume daily. Also, how much time will it take for him to recover? Okay, so first of all, main cheese I need to know is okay, it's not possible to inquire all such things, but ask him to start at morning with warm water or any type of green herbal tea like mint, ginger, and black salt tea. You can start with such herbal tea. Please, it's my sincere advice not to have any kind of tea or coffee at empty stomach in the morning. Okay. Right? It will definitely decreases the digestive power and his appetite also. Right? And increase the fluid in his daily diet. जो भी वो पानी पी रहे हैं उसका डबल या 3 टाइम पानी करे, that is very advisable. और पानी भी बैठ के पीना है, सिप करके पीना है. In breakfast, we can have sprouted milk along with the some peanuts, some healthy fats like some sesame oil or olive oils or peanut oil. But it should be cold press oil, not the refined one. Right? In his lunch, we can have sabji, roti, and salads and buttermilk. It's advisable not to have rice and roti together as he is already constipated, so his stomach may not have capacity to digest wheat and rice together. So it's advisable to have one grain at one time. At evening time, around 4 o'clock or 5 o'clock, we can have nuts and seeds or fresh fruits. Right? Whatever is there is in the season, he can have seasonal fresh fruits at around 4 or 5 o'clock. And at the dinner, we can have very light food like dal fry and rice, like vegetable khichdi, like vegetable oats, like vegetable millets khichdi. He can have such kind of thing. And at the night, he can have any green herbal tea or simple warm water. If he can follow this diet at least for 10 to 15 days, he can cure his constipation within 15 to 20 days. That's nice to hear. So I have one follow-up question. In many households, there is this habit of consuming rice and roti together. So, ये क्या सबके लिए problematic है? Is it bad for everyone or it's just bad for the people who are struggling with constipation? ये डेफिनेटली ये मैटर करता है कि आपकी एक्टिविटी क्या है. इफ यू आर लीडिंग अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल और यू आर अ वेरी वर्कोहॉलिक एंड यू आर डूइंग वेरी टू मच ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप बहुत अच्छी सी फिजिकल एक्टिविटी करते हो और आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, देन यू कैन हैव योर राइस एंड रोटी टुगेदर.
बट अगर आप पूरे दिन कंप्यूटर के सामने बैठे हो, आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप डेली फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो मैं एडवाइस करूंगी कि आपको वन टाइम पे वन ग्रेन ही लेना चाहिए। ऐसे आजकल बहुत ऐसे आर्ग्यूमेंट है कि हमारे एंसेस्टर जो थे वो तो सब्जी रोटी दाल राइस सब कुछ एक साथ लेते थे, बट हमारे एंसेस्टर जो वॉकिंग करते थे, जो काम करते थे, जो उन लोगों का फिजिकल एक्टिविटी थी, क्या हमारा उस लेवल का फिजिकल एक्टिविटी है? आर वी डूइंग सच काइंड ऑफ हार्ड वर्क? Right. That is to be measured. Right? So it's very advisable if you are leading a sedentary lifestyle, so you can have one grain at one time. Okay. So I am looking for actually the questions from our audience. So excuse me. Constipation diet has been already discussed. Another question that I was also about to ask you is what should be the daily water intake, especially in the cases of constipation? Okay. Daily water intake जो आपका होना चाहिए, it should be at least 10 glass to 15 glass if you are a woman and if you are leading a sedentary lifestyle. अगर आपको ज़्यादा sweating नहीं होती और आपकी physical activity इतनी ज़्यादा नहीं है, then also you have to take 12 glass, at least 3 liters of water in a day. Minimum 3 to 3.5 liter water in a day. And if you are leading a very you are doing very much physical activity and you have a very good rate of metabolism, and then you can have more than 4 liter of water in a day. Because मैं एक बात बताना चाहूंगी कि हमारे बॉडी को जब 7 to 8 times वाटर की नीड होती है, तब जाके हमको प्यास फील होती है, वी फील थर्स्ट. Okay. राइट? सो हमारा बॉडी जो है कि 7 to 8 टाइम्स वो चला लेता है. जब हमको प्यास लगती है उस टाइम भी हम उसको निग्लेक्ट कर दे कि चलो बाद में पी लेंगे, बट ऑलरेडी बॉडी ने 7 to 8 टाइम्स तो वो चीज को कॉम्प्रोमाइज किया है. अगर आप अगली बार भी पानी नहीं पी रहे हो तो आप सोचो, फिर आपको आप you have a complaint that my hair are falling and my skin is dry and I'm not feeling any kind of good appetite. So ये सारी चीजें होगी क्योंकि आपका वाटर बैलेंस बिगड़ चुका है. आप आँख को ब्लिंक करते हो, आप बात करते हो, आप हाथ चलाते हो, आप जो कुछ भी करते हो, इन सब में आपको मैक्सिमम पानी का इंटेक चाहिए. So I think that was all from my side and from audience. Thank you very much for this informative session, Harita. Thank you very much. And to our viewers, thanks a lot for being a part of this live session today. At THIP Media, we are dedicated to delivering expert health information for your well-informed choices. Avoid unreliable health information on social media. Follow the Healthy Indian Project on WhatsApp and other social media platforms. Remember, when you know better, you live better. Thank you so much, Harita. Good night. Thank you so much. Good night. Stay healthy and safe. Bye.